डेटा साइज बढ़ा दी और 6 कह रहे हैं क्लोज्ड है, तब क्या होगा? सर इसमें भी यही लगेगा सर कि जो 4 कह रहे हैं ओपन है तो 6 क्लोज करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही इसकी डीमेरिट है। तो अब आपको समझ में आ गया ये बात टॉपिक कि यस दिस सर। ओनली डील्स विद द लोकल नेबर्स। अभी इसमें के यहाँ यस पे सर। नंबर है, के इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विजिटेड। ओके, के इज यस इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। जितना जिस तरीके से होगा दैट यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट। द पॉइंट इज क्लियर। वन मोर थिंग, अगर आपको पूछना हो किन्हीं 10 लोगों से तो यू विल आस्क फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड्स ना। सबसे पहले आप कॉल करेंगे जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते होंगे, फिर यस उसके सर। बाद यही काम इसमें भी होता है। तो नियरेस्ट नेबर को इसमें एक काम और करना होता है, हमें उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है। मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ताकि जितना भी हमारा के का साइज है वो ऊपर से नीचे ले लेंगे। दिस इज ऑल एग्जैक्टली द के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट very easily. See how it works. K nearest neighbor is non-parametric supervised learning technique in which we classify the data point to a given category with the help of training. Okay, इसमें numerical भी है, I will show it. It captures information of all training data set and classifies new target data based on some kind of similarity. When you make a prediction about a new instance X, it searches the entire training set. Okay, for the k most similar cases, we call them neighbors and summarize the output variable for those k cases. So see this how it happens. Suppose आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है, एक टी शर्ट लेनी है, ठीक है, और वो पर्सन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो वी हैव हाइट, वेट एंड टी शर्ट साइज ऑफ सम कस्टमर्स। आपको पता है कि इस हाइट के, इस वेट के लोगों ने इस पर्टिकुलर साइज की टी शर्ट ली, यू नो इट। ओके, और इसकी ट्रेनिंग के बिहाफ पे आपको जो है किसी एक अपने जानने वाले के लिए जिसको आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, यू वांट टू परचेज अ टी शर्ट फॉर दैट पर्सन। So our target is to predict the t-shirt size of new customer given only the height and weight information. तो अब आप किस तरीके से इसको परचेज करेंगे? ऐसी कंडीशंस में our k nearest neighbor classifier is very helpful. Suppose there is a person named Monica and she has height 161 centimeter and weight 61 kg. And with the help of KNN, you are required to predict the t-shirt size for that person. Problem is clear? First of all, you need to understand the problem. Problem is clear? Say yes or no. Yes sir. 40%. Okay, this is correct. Okay. Ayush says listen from 4 into 4. Very good. You are correct, Ayush. Okay. Next, moving on. So this is our observed data. We are given some of the measurements where height was 158, weight was 58, and the person buys the t-shirt whose size was medium. Am I clear? Then the other data set says that 158 was the height, 59 was the weight, and medium. So in this way, if you see this data, this particular table will help you to understand what are the past records of purchasing the t-shirt with two variables, height and weight. On this observation, you are required to make a decision for this particular person, Monica, whose height is 161 centimeter and weight is 61 kg, and what t-shirt size should you prefer for that person. So how it goes on? Listen please very carefully. When we are going to calculate the similarity between two objects, we use either Euclidean distance or Manhattan distance. There are also various other things, but basically we use these two. Euclidean distance is basically the distance you have studied in coordinate geometry, distance between two data points x1, x2,
and y1 y2 is x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1 whole square. So summation I equals to 1 to 1 xi minus yi whole square between the different objects. When it comes to Manhattan distance, it is calculated by taking mod of the dash. So mod of x1 minus x2 plus mod of y2 minus y1. Whatever is the value, that is giving you the distance. So here we are going to take the Manhattan distance. So see how it works. Very carefully observe this. Height is given, weight is given, t-shirt size is given. Your data set coordinate will become how much? It is 161, 161,61. So you will, in terms of coordinate, you will write for Monica value is 161,61. Am I clear? So 161 is the height and weight is 61. Now you find the distance from this first data set. See here, first data set. So 161, 61, if you are taking the difference with 158 and 58, what you will get? 161 minus 158. Okay. Here it is taken this Euclidean distance. So 161 minus 158, what it is? 3. Under root of obviously 3 square plus 61 minus 58. Yes, sir. 61 minus 58, it is 3 square. 3. Okay. So in this way, you have to calculate all the values for means all the distance values from 158, 58, then 158, 59, then 158, 63, and these are the distance that we have calculated from the formula. Is it clear? Now what happens when you calculate all of these? The first thing required is to arrange them in terms of similarity. So here it is 8.6, 9.22, 9.49, 4.24. So what we will do, the persons who are very close, they will have minimum distance. So in the next slide, you can see it. We have arranged them in increasing order. So 1.412, and the data sample has been arranged accordingly. So 1.24, 2.24, 2.24, 3. And so on. So all the data here has been arranged in terms of their distance from 161, 61. That is Monica, for which we are going to do all these tasks of prediction for the t-shirt size. Now, if say it is said that what will be the t-shirt size? Suppose you have in this k and n, you have chosen the value of k, means the number of neighbors equals to 7. It means I am going to consult the first 7 neighbors. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have marked them with green. In that 7, how many different t-shirt size are coming? 2, low and medium. Low occurrence is 1 and medium occurrence is how much? Medium occurrence is how much? Please tell. It is 6. 6. So which one is the highest? Medium. Medium. So definitely if the value of k equals to 7, in the first 7 neighbors you have consulted, what size of the t-shirt you will prefer for the girl who has whose name is Monica and the height is 161, 61 is medium. So this gives the answer. So it is medium. Now suppose what I have done, I have increased my neighborhood. Means right now I have taken the value of k equals to 15. It means I will select from the top of this the first 15%. In that 15, just see and count in low and medium how many are medium and how many are low. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 is low and 7 is medium. So now the occurrence of low is higher. So you will say that while k equals to 15,
is less than L, so now the t-shirt size of this particular data set 161,61 will be low. So what we can understand from all this discussion is that KNN is a very simple way. It's a very simple classifier. It depends, it works on the majority count, okay, as well as the number of class for that particular data set is not fixed. It all depends on the K value, where K is my size of the neighborhood. Am I clear at this point? So Yes. I'm asking for your queries, if any. So please provide any query if you have. So simple way, calculate the distance. Distance, for that you will be provided a formula like Manhattan distance or this other distance like what was that Euclidean distance. Calculate the distance and you will get all the things. So further I here asking if any query up to here. These are numericals and they are asked. That's why I am again saying queries. So queries, type in the chat box if any. No. Okay. So last we are going to conclude it. What we have seen up to this point. See here, the pros and cons of K and N. Okay. What is the benefit of using this K and N, and what are the demerits? So if you see here, some persons are there still waiting. So process easy to understand. देखा सबसे इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है. जिस भी डेटा सेट का आपको क्लास निकालनी है, you take the similarity with all of the objects. According to the similarity, arrange them in ascending order. Choose the value of k. Then you select the k neighbors from the beginning, and then find the count. The majority will declare to which class it will belong to. So it's very easy to understand. And now we have seen in the previous lecture Bayesian classification. There it was very complicated. There were so many assumptions. It will belonging to class yes, it will belonging to class no, and all these things were there. Here no assumption about the data. It can be applied to both classification and regression. Classification अभी आपने किया, regression में हम क्या करते हैं? We predict one with respect to the other, so it can be applied to both. It works easily on multi-class operation. Okay, it is not only the case that 2 classes or 3 classes are there. Multi-class problems will be worked every time. What is cons? Actually, it is computationally expensive. Its cost is high. Okay. Set sensitive to scale of data. If data is not scaled, here we have taken decimal point and all that, so it was working very well. Also, it will not work well on rare events when there is no continuity kind of thing, and the data is fluid in nature, and it always struggles when there is high number of independent variables. There were very few dependent variables. 2 were there. If it is its number increases, then there is a problem. Okay. So now I am getting a total count of 52. It means if I subtract myself, then we have 51 participants. And what happens? I am not getting the attendance of all the persons in the chat box. And I always say that the chat box will be final. So please provide your attendance in the chat box. And remember, if it is not found in the chat box, you will be marked absent. That I do. So in the chat box, please write your attendance. So attendance, okay. Properly with roll number. And now I'm waiting for your queries also. So if you have any query, you can ask. Now it has increased. One more.
So further any queries, please ask in this lecture or in any of the lectures I have delivered up to now. सर केरन में ये जो कॉन्स है मोर इंटेंसिव एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव Yes. सर केरन का मतलब कि ऐसा कुछ मतलब सॉल्यूशन नहीं है कि कंप्यूटेशन हम डिवाइड कर सके न्यूरल नेटवर्क्स पे? तो देखिए न्यूरल नेटवर्क का एक बिल्कुल अलग इशू होता है ना। न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग बिल्कुल ही अलग है। आप ये देखिए कि न्यूरल नेटवर्क जो अपनी ट्रेनिंग करता है वो केवल इनपुट और आउटपुट बेस्ड होता है। जैसे आपको मैंने कुछ सीरीज दे दी, आप समझिएगा मेरी बात से। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे न्यूरल नेटवर्क के टर्म्स में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ सीरीज दे दी। सीरीज कौन सी? जो आप ये क्वांटैक्ट वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि इस कंडीशन में ये मेरा इनपुट है और ये मुझे आउटपुट लाना है ना। तो आप अपने ब्रेन को मॉडल करते हैं और जो भी रूल आप बनाते हैं उसी रूल को अगले सभी क्वेश्चंस पे लागू कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये काम इस तरीके से नहीं होगा। वहां इनपुट गिवन है, आउटपुट गिवन है। अब आपको अपने आप को या अपने न्यूरल नेटवर्क को ऐसे ट्रेन करना है कि इस इनपुट से हम इस आउटपुट पे कैसे आए। और यहाँ जो आप देख रहे हैं केएनएन का केस, अभी आप देखिए ये केएनएन का केस, इसमें एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कराई गई है कि इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगा, इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगा। देखिए आपको एक ही इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिल सकता है। हो सकता है, बात समझिएगा, 160 और 60 हो, यहाँ मीडियम हो, और 160 और 60 फिर से हो, उसको उसने लो लिया हो, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है। ये बहुत सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ नहीं करना है। आपने देखा कॉलेज खुला है कि नहीं, डाउट है, आपके पास 5 लोगों का बैलेंस है, ठीक है, और आपके लिए वही 5 लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। 16 में से आप उन 5 को कॉल करके और उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। अभी आप जैसे ही अपना जो ये डेटा सेट का साइज है वो बढ़ा देते हैं, यानी के की वैल्यू बढ़ा देते हैं, नियरेस्ट नेबर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो आपका डेटा अलग, मतलब आपकी क्लास अलग हो जाती है। न्यूरल नेटवर्क में ये केस नहीं होता है। अच्छा सर, ठीक। ये भी डिफरेंस है। न्यूरल नेटवर्क में अगर आपने एक बार एक क्लास दिखा दी तो 99% वो फिर उसी क्लास को रिसीव करता है, क्योंकि रूल बनाया है ना उसने। यस सर, यस सर। ये चीज बनेगी आपकी। ओके, ठीक सर, थैंक यू। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही सब आप लोग के उसमें प्रैक्टिकल सॉरी वाइवाज में और प्रोजेक्ट में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। अब ये मतलब गुड लक चाहिए या बैड लक चाहिए जो भी रहा, वरना मैंने चीजों को काफी रोक के रखा था कि मैं ये सब चीजें आपको क्लास में ही बताऊंगा, लेकिन अब टाइम नहीं मिला तो इनको इस तरीके से कंप्लीट करना पड़ता। बट आपकी मेहनत रही तो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। Okay, so now I declare the class as over. If you have any queries, you can ask. If you have not provided your attendance, provide it. I am waiting for the next few minutes. Okay. So queries and then your attendance. And today is the last date for assignment. Assignment is uploaded. So please hand in as soon as possible before the time ends. And section A, very important thing. I have given one information. Upload your file in a single PDF scanner scanned. It was very difficult for me to read your file. The readability was very poor. Okay, so please pay attention. Now those who have given the attendance, they may leave the meeting. I'm waiting for the others. So hurry up. You have any query, you can ask. I'm waiting for it.
Okay, further anyone? Any query? This is the last roll number I got. So is the attendance over? So we have 2 more minutes remaining. The session will go off. The limit is 45 minutes only. Hurry up. Okay, thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Okay, without problem, please. So, 10, you say 60, So those who have given attendance, 70.